Beijing is steadily working to conquer the final frontier, and Washington is wary. The Pentagon says China's space program is now outpacing the U.S. with more than 60 launches in 2022. China aims to be a world's leading space power by 2045. China has been excluded from the International Space Station since 2011, but China hasn't been bothered at all. The reason? The Chinese have their own space station. The Tiangong is seen as an emblem of China's growing clout and confidence in its space endeavors. The Tiangong space station is the centerpiece of Beijing's ambitious space program. The Shenzhou 15-man spacecraft launch mission a complete success. हेलो दोस्तों, चाइना बहुत ही तेजी से स्पेस में अपना कदम जमा रहा है। चाइना अपने स्पेस स्टेशन के लिए 11 लॉन्च केवल 20 महीनों में ही कंप्लीट कर चुका है। चाइना के इस कदम को जहां कुछ लोग और देश इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग सरप्राइज हैं। Here's the risk that we face right now. The International Space Station is coming to the end of its life. There is a brand new Chinese space station. They call it the Chinese International Space Station, and all of the capabilities that we have helped develop for all these countries around the world might eventually start participating with the Chinese space station. I think that would be a mistake for the United States of America to develop all of that capability and then turn it over to a country that doesn't have our best interests at heart. And China leads the world in entangled quantum particle distances. China already has the largest telescope in the world, while ours collapsed under structural failure. टियांगवांग जो कि चाइना की इंडिजिनस स्पेस स्टेशन है, वहीं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाने और ऑपरेट करने में 15 देश शामिल हैं और इसको असेंबल करने के लिए 30 से ज़्यादा मिशन लॉन्च करने पड़े। टियांगवांग जो कि चाइना के स्पेस प्रोग्राम और उसकी कैपेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, वहीं ये अमेरिका और चाइना के बीच में टेंशन को भी बढ़ा रहा है। I visited China 20 years ago as part of a government a commission, and we visited the offices of industry leaders and political leaders. I looked at their hands, and on their ring fingers were the graduation rings from MIT here in the United States, from Caltech. So these were American-trained engineers who were Chinese, American-trained, went back to China to start implementing some of the and bringing to bear what role innovations in science and technology would play on the future of their economy. One of the most impressive things to me about China is when they say they're going to do something, they do it. ये एक्सपेक्टेड है कि ISS की रिटायरमेंट के बाद टियांगवांग एकमात्र स्पेस स्टेशन ही ऑर्बिट में रह जाएगा। Why is the space race so important to these countries? Well, it's a whole variety of reasons. Part of it is, of course, national prestige and pride and demonstration to the world that you have the capacity to do that kind of thing. But it's also now putting down a marker about what China is intending to be in terms of a modern, science-driven, education-driven nation state of the 21st century. GPS or the GLONASS system only use one type of orbit, but with China use 3 types of orbit. It can provide very accurate services to the whole world. For any satellite navigation system, the feature is that the more satellites you have, the accuracy will be better. दोनों देशों के बीच में ग्रेट पावर और टेक्नोलॉजी कंपटीशन खुलकर बाहर आ चुका है और कभी भी ये स्पेस में पहुंच सकता है। Drivers to international shipping, to farming, to banking, to disaster response, to U.S. and allied military forces on the ground. How important space is to our country and to our national security. Space is critical to our country
The way we communicate, the way we navigate, the way we produce food, the way we produce energy, the way we do disaster relief, the way we predict weather, national security and defense, over-the-horizon communications. Every banking transaction in this country is dependent on a timing signal from GPS. You got to regulate the flows of electricity on the power grid. It is dependent on a timing signal from GPS. We think about terrestrial wireless networks, our cell phones, dependent on a timing signal from GPS. And a lot of people don't think about that, but you know who does? All of the competitors and adversaries of the United States know that we are dependent on space. That's why they are developing capability to launch direct descent anti-satellite missiles, co-orbital anti-satellite satellites. They're developing technology that can be rapidly proliferated, like jamming and spoofing and dazzling and hacking. The enemies of this country must understand that they will never get an advantage over us by destroying space. यूनाइटेड स्टेट बहुत लंबे समय तक स्पेस में अपनी बादशाहियत बनाए रख पाएगा, ऐसा अब लग नहीं रहा है. China's space program essentially, how much closer is it to achieving its ambitions of being a world-leading space power within the next 2 decades? It's already, frankly, almost there. Unfortunately, the International Space Station did exclude China. They built their own. टेस्ट एक्सपीरियर के दौरान चाइना सक्सेसफुली 3 मेगा स्पेस स्टेशन मॉड्यूल और सिंजो मेन स्पेस क्राफ्ट और 4 तिन्हे कार्गो क्राफ्ट डिलीवर कर चाइना अपनी पोटेंशियल को मेन स्पेस डोमेन टेक्नोलॉजी में प्रूव कर दिया. The Shenzhou 15 mission, for example, it docked up there yesterday, and it took about just over 8 hours to dock. You know, you're docking with the International Space Station, it takes you about 16 to 18 hours, much longer. So new technologies and new capabilities and capacities that are being demonstrated by the Chinese in their burgeoning space program. Once you're in space, your blood will go to your head and your tongue will swollen. So that is the immediate effect, and also you lose your appetite. And in the coming months, as they have stayed in orbit for 6 months, that will experience a lot of physical changes, including cardiovascular changes and loss of bone mass. So they need to have a constant exercise on board the station. इस पैलेस ऑफ हेवन में क्रू के लिए 2 सेपरेट किचन हैं, जहां 2 क्रू मेंबर एक साथ खाना रेडी कर सकते हैं और एक साथ या सेपरेटली खा सकते हैं, और 2 बाथरूम के साथ 6 स्लीपिंग बूथ भी है, जो कि वेंटाइन कोर मॉड्यूल में लोकेटेड है. स्टेशन से एक रोबोटिक आर्म भी जुड़ा है, जो कि सपोर्ट करता है आउटसाइड एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट को. इसका मेन फंक्शन स्टेशन में ऐसे रिसर्च को परफॉर्म करना है जिससे ये पता चल सके कि जीरो ग्रेविटी का लाइफ पर क्या इफेक्ट होता है. साथ ही ये भी जानना है कि डिफरेंट प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ और डेवलपमेंट पर इसका क्या असर पड़ता है. So in the future, for instance, making some medicine needs very quiet and very special environment which can only be realized in space. So the gene of the seeds will be changed very fast and more remarkably than that on the ground. Maybe they are more delicious or they have more potassium amount. स्टेशन पर साइंस एक्सपेरिमेंट शुरू भी हो चुके हैं और 1000 एक्सपेरिमेंट प्लान है, जो कि आने वाले 10 सालों में किए जाएंगे. इसमें मंकी रिप्रोडक्शन और बायोलॉजिकल टेस्ट है. अब मंकी इसमें कोऑपरेट करेंगे या नहीं, ये डिफरेंट मैटर है. टियांगोंग का कम्युनिकेशन सिस्टम टनों गीगा डेटा हर दिन ग्राउंड पर सेंड करता है, और इसमें एक सुपर कंप्यूटर भी मौजूद है, जो कि हर वक्त यूनिवर्स से मिलने वाली डेटा को एनालाइज करता है. टियांगोंग हाईलाइट करता है चाइना का पॉलिसी, सेल्फ रिलायंस और इसकी एबिलिटी को, जो कि स्पेस में पावर लैंडस्केप और डायनेमिक को चेंज कर सकता है. By 2025, it plans to collect asteroid samples near Earth, then a slew of targets by 2030. First to launch a mission to Mars to probe asteroids. Another goal, an unmanned exploration mission to Jupiter. It also plans to land Chinese astronauts on the moon for the very first time, all within the next decade. By 2035, it is aiming to develop and launch a 100-ton super heavy lift carrier rocket. And 5 years after, we could see a nuclear-powered space shuttle that will enable resource exploration and asteroid mining. There is also the intention to construct a space-based solar power station.
And China aims to be a world's leading space power by 2045, one that can carry out large-scale explorations on planets and comets in the solar system and send astronauts to Mars. जहाँ यूनाइटेड स्टेट की प्रायोरिटी है जियो पॉलिटिकल और वार, वहीं चाइना अपने आप को ग्लोब से बाहर निकालकर स्पेस में स्टेबल करने में लगा हुआ है। स्पेस में इन दोनों बड़ी ताकतों के अलावा एक और ताकत भी उभर कर बाहर आ रही है, वह ताकत है इंडिया। अभी हाल ही में इसकी स्पेस एजेंसी इसरो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके ये बात साबित कर दी है कि वो भी इस स्पेस रेस में है और आने वाले वक्त में बड़ी दावेदार बन सकता है। आपको क्या लगता है, चाइना यूनाइटेड स्टेट को स्पेस में टक्कर दे पाएगा? कमेंट में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।